गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, प्रणाम एंड वणकम। आज हम देखेंगे चाइना वर्सेस चाइना, द इकोनॉमिक डीके। ये क्या है कहानी? आज हम बात करेंगे एक वो चाइना जो आगे बढ़ रहा था और एक वो चाइना आज पिछड़ रहा है, और इसका कॉमन थ्रेड है जी जिनपिंग और उसका इकोनॉमिक थियरी जो बिल्कुल बेकार है। ये पहले बता रहा हूँ। ओके, एक वीडियो किया था हमने 10-15 दिन पहले विद जनरल दुष्यंत, जिसमें हमने पूरा विस्तार में देखा कि व्हाई चाइना कैन नॉट रिकवर। आज का वीडियो इसी के सिलसिले में है। इट्स ऑलमोस्ट दिस सेम थिंग आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश व्हाई चाइना कांट रिकवर, पर अप्रोच अलग होगा। उस वक्त मैंने देखा था और एग्जामिन किया था 18 पार्टी कांग्रेस, 19 पार्टी कांग्रेस, 20th पार्टी कांग्रेस। उनकी लिखाई से क्या हमें मिला है, सीख या नतीजा या whatever outcomes. Why is China the way it is? Based on what they have written and what they have spoken and what their leaders have spoken. Today, the approach is going to be slightly different. I'll use those 18, 19, 20th Party Congress proceedings, but I'll do a back and forth. आज का हालत क्या है, फिर देखेंगे इस हालत के लिए what is the problem, where did it start, then we'll get back to the current and then go back, and we'll do a back and forth and see why there will be a economic decay. It's going to be interesting. First sign of economic decay. Look at this. Jack Ma. He was the most brilliant entrepreneur which China has produced. He was giving Microsoft and Amazon and everyone a run for their money. सब डर रहे थे कि भाई ये कहां से आ गया जैक मा, आजकल क्या कर रहा है ये। Jack Ma praises rural teachers for their educational passion and belief in the future in annual address. यानी कि ये स्कूल के टीचरों को पढ़ा रहा है क्या करना है आगे। बिल गेट्स जैसे लोग अपना कार्यकाल के बाद they become philanthropists. बड़ा बड़ा they do a lot of things. And ये देखिए क्या है, decay, economic decay. Why? He's been screwed by Xi Jinping. Paul Krugman, he's a Nobel Prize in economics. I saw his article in New York Times. What he usually says, China has underperformed by just about every economic indicator other than official GDP, which supposedly grew by 5.2%. Okay, supposedly. As per him, it's not a full-blown crisis, at least not yet. But there's reason to believe that China is entering an era of stagnation and disappointment. Very deep words. He's been a little diplomatic when he says it's not a full-blown crisis. I feel it's a full-blown crisis. All you have to do is connect a few dots and the crisis is there. You connect what's happening in the PLA, what's happening in demography, X, Y, Z. Okay. Their premier, Li Keqiang, he went to the economic forum at Davos, हाल ही में, और स्विट्जरलैंड में बोला कि भाई हमारा जीडीपी तो 5.2% आगे बढ़ा पिछले साल। जैसे उसने बोला, अगले दिन स्टॉक मार्केट गिर गया।
2.6% स्टॉक मार्केट गिर गया। अगले दिन किसी को, उनके लोगों को भी बिलीव नहीं था कि ये सही बोल रहा है, ये क्या झूठ बोल रहा है ये। अब देखिए, और ये है स्टॉक मार्केट, एक लेफ्ट में शंघाई का है और दूसरा हांगकांग का स्टॉक मार्केट है। ये ग्राफ देखिए, दोनों डाउन। ये 3 साल का ग्राफ है ये। धीरे 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 ये डाउन होता जा रहा है। ओके, चाइना का एक डेवलपमेंट मॉडल था, राइट? अगर आप उस डेवलपमेंट मॉडल को देखोगे, या किसी डेवलपमेंट मॉडल को देखोगे, एनी सक्सेसफुल डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट्स इट्स ओन प्रॉब्लम्स और उस डेवलपमेंट मॉडल को बिगाड़ देता है। ये मॉडल में बदलाव चाहिए ताकि वो इम्बैलेंसेस जो आते हैं बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन दिस, बिकॉज ऑफ द मॉडल इटसेल्फ, यू कैन रेक्टिफाई। अगर वो नहीं हुआ, other imbalances come in. Problem is the China model cannot change. Why it can't change? Because the communist system is rigid. ये कम्युनिस्ट सिस्टम है, ये छोड़ेगा नहीं मॉडल को बदली करने के लिए, और ये हो रहा है, राइट? ये इसीलिए तो इनका स्टॉक मार्केट गिर रहा है। और ये भी है, इन्हीं का एक इकोनॉमिस्ट ने बताया, चाइना स्ट्रेंथ गैप विद यूएस विल वाइडन एज competition deepens. It's as per top political scientists. So they are in problems. This is not a simple article. In this, he has exactly said why this will happen. Okay, now I'm going to take you back in time. Okay, and I'll blow this up and then we'll talk about it. It was in 2005 and to 2000, the problems जो चाइना में है वो नया नहीं है। 2005 और 2010 के बीच में, यानी 15 साल पहले ही, ये इम्बैलेंसेस जो है ऑफ द हाई सेविंग, हाई इन्वेस्टमेंट, डेट ड्रिवन मॉडल had come to the fore. वो तभी पता था। Now, Michael Pettis, who I feel is a fantastic economist as far as China is concerned, has said that China has gone through a rapid, healthy growth in the initial phases. And then it is going through a rapid, unhealthy growth driven by debt. That's the current phase. And then it will face a difficult adjustment. And he's compared what's happening with Japan, what's happened with Japan, and what happened with Brazil with what's happening in China. और ये बोलता है कि चाइना का रैपिड हेल्थी ग्रोथ का समय खत्म हो गया, अभी रैपिड अनहेल्थी ग्रोथ, डेट ड्रिवन ग्रोथ हो रहा है, और डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होगा अगर होगा तो। पर ये तो 2005 और 2010 की बात है। 2012 में दो चीजें हुई। एक है ये चाइना 2030 रिपोर्ट और 18th पार्टी कांग्रेस, इसके बारे में बात करेंगे आगे। 2013 और 2015 के बीच में Xi Jinping ने he shifted the whole Chinese system to a state-driven model. इससे पहले 2015 तक चाइना का एक कहावत था, नो पॉलिटिक्स नो प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, पॉलिटिक्स मत करो। पॉलिटिक्स जो है सिर्फ सीसीपी के लिए है। जब अगर पॉलिटिक्स करोगे तो आपके साथ हम छोड़ेंगे नहीं। उससे क्या है, जैसे शी जिनपिंग को पता चल गया कि कोई ना कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, करने वाला है या कर सकता है, उसको विनाश कर दिया। और उसका सबसे पहले उदाहरण है जैक मा। 2017 में 19th पार्टी कांग्रेस हुआ, देन वो बहुत निर्णायक था, उसके बारे में बात करेंगे। 2020 और 2022 में इसका क्या है कहानी, वो है कोविड ड्रिवन मॉडल। और उसी के बीच में 20th पार्टी कांग्रेस हुआ, where it was said that Xi Jinping will get his third term.
But today, the China model has 4 Ds: debt, demographics, demand, and decoupling. Too much debt, demographic changing, demand is not there, बिल्कुल, और decoupling हो रहा है. ये है इनका मोटा मोटा, but we'll go into a little detail. सबसे पहले ये देखेंगे हम ये या द चाइना 2030, इसके बारे में हम बहुत विस्तार में बात करेंगे. फिर 18 पार्टी कांग्रेस हुआ, जिसमें ओपनिंग एंड रिफॉर्म की बात हुआ, जो सिलसिला चला आ रहा था. ओपनिंग का मतलब चाइनाज मार्केट आर ओपन टू एफडीआई, एंड रिफॉर्म का मतलब प्राइवेटाइजेशन. और 18 पार्टी कांग्रेस कब हुआ? 2012 में. चाइना 2030 रिपोर्ट कब हुआ? अप्रैल 2012 में. 18 पार्टी कांग्रेस अक्टूबर 2012. उसमें रियूनिफिकेशन की बात हुआ, मार्केट प्रिंसिपल्स का बात हुआ, डेवलपमेंट और रियूनिफिकेशन की बात हुआ. पर जैसे जी जिनपिंग ने सत्ता संभाला, he amended the constitution, he incorporated the Xi Jinping thought, and he paved the way for third term, कि भाई तीसरा बार मैं वहां प्रेसिडेंट बन जाऊं. 19 पार्टी कांग्रेस में बिल्कुल बदलाव हुआ. राइट, ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस है. इसमें क्या बोला है इसने? चाइना हैज एंटर्ड अ न्यू एरा, चाइना हैज अराइव्ड, इट इज रिच, टॉल एंड स्ट्रांग. भाई हम तो नंबर 1 बन गए. इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी. पहली बार इसने रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन बोला. इसमें क्या है रिजुविनेशन? कि चाइना विल बिकम a developed country by 2049, and Taiwan will be reunited by force or by politics. Right? फिर उसने बोला कि भाई अभी तक जो हुआ है वो अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ठीक नहीं है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी लगाओ. फिर स्टेट कंट्रोल शुरू हुआ और पाथ ऑफ सोशलिज्म पे चल पड़ा. तो 19 पार्टी कांग्रेस जो है वो निर्णायक है. कब हुआ ये? 2018 अक्टूबर में. तो 2013 और 2015 18 के बीच में चाइना बदल गया. फिर 2018 के बाद जब जी जिनपिंग बिल्कुल he was in the chair and unshakable, he spoke of common prosperity, wolf warriors. तब तक कोविड आ चुका था, लॉकडाउन, उसने indiscriminate lockdown in China. He broke the property at tech and fintech sectors, क्योंकि उसको वो जो बात हुआ ना, मैंने बोला नो पॉलिटिक्स नो प्रॉब्लम. He felt कि इसमें कोई कोर्ट है, कि ये जितने प्रॉपर्टी वाले हैं या फिनटेक और एडटेक वाले हैं, ये हो सकता है ये पॉलिटिक्स में घुस जाए, तो इनको खत्म करो. और फिर एक कल्ट प्रोपेगेंडा शुरू हुआ. देन ऑफ कोर्स द 20th पार्टी कांग्रेस जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसमें तो सिक्योरिटी, मिलिट्री, चाइना ड्रीम, रिजुविनेशन, स्टेट कंट्रोल. ही स्पोक ऑफ डार्क क्लाउड्स ऑन द हॉराइजन. रिच न्यू एरा टॉल स्ट्रॉन्ग से डार्क क्लाउड्स में बदल गया. ब्लैक स्वान इवेंट्स, ग्रे राइनो इवेंट्स, economy backseat it took. Economy didn't matter to him after that. So from strategic opportunity, he talks of dark clouds. From new era and rich and tall and strong, he talks of black swan and grey rhino events. So this is a marked shift. But is that all? कुछ और भी होगा. तो यहाँ आता हूं मैं चाइना 2030 का रिपोर्ट. ये this is a fantastic report. You have to understand this. ये एक रिसर्च है conducted jointly with experts from World Bank and China. Okay, such a exercise was undertaken for the first time in history, in Chinese history. Okay, it was organized by China's Ministry of Finance. It was not a standalone document.
Okay, the Development Research Center of the State Council of PRC and the World Bank. It was not a prescription being given to them. अगर इस रिपोर्ट में देखेंगे तो एक्नॉलेजमेंट्स 4 पेज के हैं और उस 4 पेज में 3 पेज तो चाइनीज पीपल को एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाइनीज एक्सपर्ट्स. ओके, it was undertaken by a joint team and it was submitted in April 2012. Okay, और अप्रैल 2012 में ये सबमिट हुआ एंड शी जिनपिंग गॉट इलेक्टेड इन अक्टूबर. 6 महीना था उसको ये पूरा पढ़ने के लिए. ये क्या, व्हाट डज दिस रिपोर्ट से? इससे पता चलेगा आपको चाइना कहाँ था और कहाँ पिछड़ गया. एंड दिस वाज साइंड, ये रिपोर्ट वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक and a Chinese minister, co-authored. Okay, what does the report say? This was as of 2012. In the next 15 to 20 years, China is well positioned to join the ranks of the world's high-income countries. Has it happened? No. This is the estimate in 2010-12. So this report and study started in 2010 and finished in 2012. And that was the peak of the Chinese economy. He says even if growth moderates, China is likely to become a high-income economy and the world's largest economy before 2030. Will it happen? We'll see. It won't happen, but I will prove it to you by a Japanese report. Can China's growth rate still be among the highest in the world, even if it slows down from the current pace? That's the question. The answer is no. Can it maintain this rapid growth with little disruption to the world, the environment, and the fabric of its own society? Question mark. The most important thing about this report, it focuses on how. कैसे करना है? 2030 में किस तरीके से चाइना विल बिकम अ हाई इनकम कंट्री और डेवलप कंट्री और किस तरीके से इसको करना है. ये नहीं कि क्या करना है, नहीं किस तरीके से करना है, तरीका बताया गया इस रिपोर्ट में. ओके, इन्होंने ये भी बताया व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड चाइना सक्सेस. pragmatic and effective market oriented systems, balancing growth with social and macroeconomic stability, inter-regional competition between the states, domestic market was integrated with outside economy, and steady integration with the global economy. आज के दिन ये सब उल्टा हो रहा है. 10 साल पहले कि बोला भाई आप इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे हो. Then this report also says there are signs pointing to a growth slowdown in China. What are these signs? Very interesting. Very, very interesting. मेरे हिसाब से this report was a blueprint. अगर if China had followed this report, even 50%, I have no doubt in my mind that we would have been looking at a superpower. This report and the 19th Party Congress finished off, or whatever this report said, 19th Party Congress did exactly the opposite. China had finished. But let's see what are the signs pointing to a slow growth there. He says GDP growth to decline gradually to around 5% by 2026-30. It is happening. In fact, it is happening much more. As per one report of the Rhodium Group, last year, though they have said the growth is 5.2%, Rhodium Group says the growth is only 1.5%. Okay? Growth contribution from shifting resources from agriculture to industry has maxed. Very important.
When a country grows, urbanization takes place. People come from the villages to the urban areas. Service sector goes up, industrialization goes up, everything goes up because agriculture cannot sustain, जो आबादी को सस्टेन नहीं कर सकता, उतना नौकरी नहीं होता एग्रीकल्चर सेक्टर में। चाइना में उन दिनों में हुआ था, अभी वो हो नहीं सकता, इट इज मैक्स्ड। तो एक रोक है, दैट हद चाइना ने तब तक 2012 तक हो गया था। 2012 में इन्होंने बताया, ये शब्द वही है, चाइना इज पॉइज्ड फॉर अ रेंचिंग डेमोग्राफिक चेंज। वो आजकल हो रहा है। द ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो विल डबल इन द नेक्स्ट 2 decades. By 2030, it will be between 22 and 23%. China's labor force is projected to start shrinking from 2015. ये सब हो रहा है, उन्होंने पहले ही लिखा। पर खैर उस वक्त तो सब जी जिनपिंग was on cloud number 9. Okay, China's external accounts are expected to show a decline in the trade surplus. इनका trade surplus होगा नहीं, तो हो रहा है अभी, कम हो रहा है। Export growth will slow. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चाइना अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता जाएगा, बाकी देश भी अपना एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के चक्कर में है, खास करके इंडिया, यूएसए, यूरोप वगैरह। तो सब एक्सपोर्ट करेंगे तो खाएगा कौन उसको, कौन कंज्यूम करेगा? ओके, तो इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है। इन्होंने उस वक्त 12 साल पहले बताया गया ये। लास्ट पॉइंट, चाइना's current pattern of development has also placed considerable stress on the environment, land, air and water, pollution। और इसके बारे में देखिए, ये तो हमने पहले भी दिखाया आपको कि चाइना का पॉपुलेशन, गट रंचिंग डेमोग्राफिक चेंज, इनका पॉपुलेशन पिछले साल इन 2022 their population fell by nearly 1 million, अभी 2 मिलियन, अगले साल 4 मिलियन हो जाएगा और घटता जाएगा। ठीक, बर्थ सिर्फ 9 मिलियन हुए, जो मरने वाले का संख्या है वो 11 मिलियन, इसीलिए 2 मिलियन का फर्क। और चाइना बूढ़ा होते जा रहा है। सो एक दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट, ये एडजस्टेड रेट है, पर एक्चुअल जो है वो 25% से जो ज्यादा है, और ये जून तक 12 मिलियन ग्रेजुएट्स विल जॉइन द वर्कफोर्स, और उनके लिए जगह नहीं है। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया इस रिपोर्ट में, चाइना का क्या अपॉर्चुनिटीज है, जल्दी से इसको भी देखते हैं। Continued rapid economic development and decreases in inequality will swell the ranks of middle class and accelerate domestic demand। यानी मिडिल क्लास बढ़ेगा, एक्चुअल जो है मिडिल क्लास घट रहा है। और ये मेरा अगला ब्रॉडकास्ट में होगा, क्योंकि मिडिल किंगडम का मिडिल क्लास घट रहा है, यही हमारा नेक्स्ट पीक इनटू एवरीडे चाइना होगा। क्योंकि मिडिल क्लास नहीं है तो देश नहीं चलेगा। ओके, increase specialization, intra-industry trade and two-way flow of investment will allow China to continue to exploit opportunities to narrow the gap between its capabilities and technological frontier through adaptation and mastery of existing technologies। इस पे चाइना बहुत जोर ज्यादा दे रहा है, पर आज के दिन बाकी देश ने भी शुरू कर दिया ये। पर चाइना के पास पैसा है, वो हर जगह जाके निवेश करना चाहता है, और इसी चक्कर में जी जिनपिंग साहब ने ये बीआरए का कदम उठाया बिना सोचे समझे, और फंस गया। अपॉर्चुनिटी है, इस्तेमाल करो, पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जिकोनॉमिक्स है ना। ओके, चाइना's growing technological prowess will lead to rapid change in its industrial structure।
which will create new areas of dynamic comparative advantage. वो हो रहा है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हुआ, बैटरीज में हुआ, एरोस्पेस में हुआ, आगे बढ़ रहा है. There's a growing recognition within China that the current pattern of production and growth is unsustainable and is giving rise to new approaches towards realigning government priorities. ये इनका सोच था 2012 में कि भाई जो प्रोडक्शन और ग्रोथ अनसस्टेनेबल है, नया तरीका अपनाना पड़ेगा. पर नया तरीका अपनाने से पहले जी जिनपिंग आके उसने अपना नया तरीका शुरू किया, जिससे ये सब डाउन हो गया, मीटर डाउन कर दिया इसने. ये अपॉर्चुनिटीज में कोई एक अपॉर्चुनिटी उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की, सिवाय टेक्नोलॉजी. ओके, रिस्क्स. This report also spoke of risk. It's a fantastic report. अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो. आप सिर्फ चाइना 2030 टाइप करो वेब में, एक पहला आएगा, उसको पढ़िए. लंबा चौड़ा रिपोर्ट है. Those of you are interested. Okay, what are the risks? He says a macroeconomic shock like a sudden decline in real estate prices and a sharp contraction in construction and investment, or a rapid growth slowdown in advanced economies leading to a sharply lower trade and growth. 2010, it was predicted that there will be a decline in real estate and construction and investment will have to be harnessed or pulled back. Has he done that? Till date, no. Instead of responding with policy reforms to address structural problems, the government applies macroeconomic measures to stimulate the economy. Then inflation and instability could result. That's happening. Okay? Policy reforms are not taking place. Government is applying macroeconomic measures. So it's gone into deflation and stagnation, जो पहले बताया उसने, Paul Krugman. That's why I first showed you कि आज का दिन क्या है और पीछे जाते हैं उस वक्त का क्या है. Risk of sharply lower growth rates is exacerbated by China's relatively high income and asset inequality and low consumption, unequal access to public utility services. ये सब है, ये है ही नहीं, ये तो बदला नहीं कुछ, right? So there's also this lack of portability of human people. अगर मेरा जन्म विलेज में हुआ तो मैं शहर नहीं आ सकता, अगर शहर हुआ तो मैं विलेज में नहीं जा सकता पढ़ाई के लिए, किसी चीज के लिए. इनका सिस्टम है कुकू सिस्टम. उससे क्या है, वो लोग जहाँ हैं वहीं बेटर हो. The risk, the rising ranks of the middle class and higher education levels will inevitably increase the demand for better social governance and greater opportunities for participation in public policy debate and implementation. Unmet, these demands could raise social tensions. Very important. The middle class has grown. Now it is shrinking. Social tensions are on the horizon. एक बार towards the end of COVID, they came up, but they were pushed back. But now it can come back up anytime. As the economy goes, yes, right? And that's why I said the middle class. The middle class is important. I'm going to do a full session on the middle class on China. Okay, China's growth pattern, which has been particularly intensive in energy and natural resources use, contributing to a widening environmental deficit and exposing the economy to commodity price shocks. ये हो रहा है because there's energy deficient. Okay, चाइना का होम प्राइसेस आपने देख लिया, उसने बोला कि शॉक होगा, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक. ये तो हो रहा है, इन्हीं का है ये. लेटेस्ट ने 5-10 दिन पहले का आर्टिकल है. होम प्राइसेस कंटिन्यू टू डिक्लाइन विद हाई बिगेस्ट ड्रॉप इन नियरली 9 years. बायर कॉन्फिडेंस है ही नहीं. किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि
ये खरीद सकते हैं। Xi Jinping lays out a plan to make China a financial superpower but wants of risk. वही बात है। इसमें क्या है कि बनाना चाहता है फाइनेंशियल सुपर पावर, किस तरीके से बनाना चाहता है? नहीं, नॉट थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स, थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, प्रॉपर्टी में किस तरीके से उसको रिवाइव करना वो देखो। जब जरूरत है कि नौकरियां बनाओ ताकि लोगों के पास पैसा हो और लोग खर्च करना शुरू करेंगे तो उल्टा ये मतलब सुई ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसे चला रहा है और ऐसे चलाते चलाते चाइना यहाँ तक पहुंचा है। एक और बात इन्होंने बताया है इस रिपोर्ट में, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। He says perhaps the most important global mega trend is the rise of China itself. No other country is poised to have as much impact on the global economy over the next 2 decades. Even if China's growth rate slowed down as projected, it would still replace the USA as the world's largest economy by 2030. Its share in the world trade could be twice as high. It's likely to remain the world's biggest emitter of carbon dioxide. It is expected to remain the world's largest creditor. Okay? Some have argued that by 2030, China's influence in the global economy could approach that of United Kingdom in 1870 and United States in 1945. That was the potential of the Chinese economy. And that today हम सबको पता है कि होने वाला नहीं है, राइट? ये होने वाला नहीं है। ओके, ये भी बोलता है कि चाइना's economy in 2030 will be more complex, market driven, knowledge centered and oriented towards services. 2012 की बात है ये। उनका अनुमान था ये होना चाहिए या होगा। आज के दिन क्या है? ये इसके विपरीत है। Its integration with the global economy will make it more interdependent with other economies, at the same time more vulnerable to external shock. आजकल तो ग्लोबलाइजेशन तो खत्म हो गया, deglobalization और decoupling हो रहा है, and China is feeling the external shock of this. It will have deeper and more stable financial markets, which can lay the foundation for an open capital account and broad acceptance of the renminbi as an international reserve currency. उस वक्त लगाया था इन्होंने अनुमान कि ये यूएन जो है वो रिजर्व करेंसी हो सकता है बाय 2030। अभी तो चांस ही नहीं है, जिस तरीके से चाइना चल रहा है। देखिए, why have I started with what was today? I've gone back to tell you what's the potential of, and this report actually is the masterpiece of China becoming a superpower, provided it had no politics. ओके, अभी देखिए स्टॉक्स तो गए, आज मैंने आपको दिखा दिया, कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, ठीक है? कोई बाहर से खरीद नहीं रहा, ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओके? इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इनोवेशन। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, व्हाट इज द रोल? It says it's critical because innovation at the technology frontier is different in nature from simply catching up technologically. अगर इनोवेट करना है तो आपको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। इनोवेशन कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू गवर्नमेंट प्लानिंग। दैट इज व्हाट जी जिनपिंग ट्राई कर रहा है। More enterprises are involved in the process of innovation, the greater are the chances for technological breakthroughs, and more likely that new discoveries will be translated into commercially viable products. As enterprises take a leading role, the government needs to adopt a more supportive and facilitating role. इसने तो अलीबाबा वाले को तो बोल दिया कि भाई जो आप टीचरों को पढ़ाओ। ये एक तो मैंने अलीबाबा बोला,
इस तरीके से बहुत लोगों को आउट कर दिया। जो भी इसके अगेंस्ट था उसको जेल कर दिया। जैसे जिमी लाई है, वो ही वाज अ मीडिया मोगल इन हांगकांग, उसको जेल कर दिया। आजकल उसका क्या कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है। Lastly, while the government reduces its role in the markets, resource allocation, production, and distribution, it should step up its role in financing public goods and services. ये भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, right? So how can China become a superpower? How तो चाइना का हालत क्या है? And this is important. तो मैंने बोला ना, master plan, 6 strategic directions for China's new development strategy. This report lays down first, implement structural reforms to strengthen the foundations for a market based economy, redefine the role of the government, reform and restructure state enterprises and banks, develop private sector, promote competition, deepen reforms in land, labor, and financial markets. Market based economy तो है ही नहीं आज के दिन. Accelerate pace of innovation, create an open innovation system, encourage Chinese firms to engage in product and process innovation. No way, it's gone. And also participate in global research and development networks. इन्होंने जो global research में किया, हमें वायरस मिला. Seize opportunity to go green, zero. Why? China wants to run heavy industries. For heavy industries, it needs energy. Energy के लिए कोयला जलाने की जरूरत है. Go green नहीं, वो go black है. Fourth, expand opportunities and promote social security by facilitating equal access to jobs, finance, quality social services, and portable social security. पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया कि हाउ पीपल आर फॉलिंग आउट ऑफ द health schemes in China. Why are they falling out of the health schemes? Social security, they believe that is useless. Strengthen the fiscal system by mobilizing additional revenues and ensuring local governments have adequate financing. Local governments are ठप है सारे. All the local governments are in problems. Last point, seek mutually beneficial relations with the world by becoming a proactive stakeholder in the global economy, actively utilizing multilateral institutions and frameworks, and shaping the global governance agenda. What did Xi Jinping do? Xiconomics? He sought all this for himself and China. No multilateral, it will be China-led, China-centric world order. They're exactly opposite of what this report says. बात ये है कि ये रिपोर्ट अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक का होता तो मैं मान जाता, बट ये रिपोर्ट खुद का चाइना का था, हु जिनटाओ का था, और उसमें बहुत समझदारी है इसमें. ओके, वापस पॉल क्रुगमैन, वापस अभी मैं जो अब हमने देख लिया क्या है चाइना 2030 in 2012. So we'll go back to Paul Krugman. He says consumer spending is very low as a percentage of GDP for multiple reasons. He says, including financial repression, paying low interest on savings, and making cheap loans to favored borrowers. इसमें क्या है, मिडिल क्लास को हिट हुआ है, और वो मिडिल क्लास किस तरीके से हिट हुआ है अगले एपिसोड में, राइट? It holds down household income, diverts it to government controlled investment. वही हो रहा है अभी. लोगों के पास पैसा नहीं है, पर गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अभी भी. ओके, a weak social net is there today, everyone knows. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है कंज्यूमर बाइंग सो लिटिल एटलीस्ट रिलेटिव टू द चाइनीज इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी. हाउ कैन द नेशन जनरेट इनफ डिमांड
to keep that capacity in use is a question he is posed. आप बना रहे हो, इसको इसको इस्तेमाल कौन करेगा? एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, लोग खरीद नहीं रहे। लोग क्यों नहीं खरीद रहे? प्रॉपर्टी डाउन है, लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर निवेश किया है, उसका मार्केट रेट डाउन है, वो बिक नहीं रहा। नौकरियां जा रही हैं, ओके? डिफ्लेशन हो रहा है, स्टैग्नेशन हो रहा है। So there's a problem, okay? Okay. There's another funny thing जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं. It's called the Dornbusch law. क्या बोलता है? He says जब भी कोई क्राइसिस होता है, the crisis takes a much longer time coming than you think. धीरे धीरे आता है क्राइसिस. Then it happens much faster than you would have thought. अचानक वो तेजी पकड़ लेता है. क्या चाइना इस कगार में खड़ा है? ये क्राइसिस तो सबको पता था 2010 से. आपने टाल दिया. आपने इसका विपरीत सब कुछ काम किया है. अब क्राइसिस आ गया है और जल्दी आपके सर पे नाच रहा है और आपके पास कोई समाधान नहीं है इसका. तो आप कैसे बढ़ोगे? ये बोल रहा है व्हाट हैपेंड इन चाइना's केस वाज दैट द गवर्नमेंट वाज एबल टू मास्क द प्रॉब्लम ऑफ inadequate consumer spending for a number of years by promoting a gigantic real estate bubble. लोगों को बोल रहे थे कि भाई आप रियल एस्टेट खरीदो. आपने कमाई किया है, रियल एस्टेट खरीदो. कमाई किया, रियल एस्टेट खरीदो. ये तो रियल एस्टेट में डालते रहे. वो एक साइकिल बनाया. बट वो तो गया काम से क्योंकि उसने शी जिनपिंग ने खुद रियल एस्टेट बबल को तोड़ा है. अब वो बाहर निकल के आएगा नहीं. ओके, तो आगे का सवाल पॉल क्रुगमन कुछ सवाल उठा रहा है. हाउ कोहेज how cohesive will China be in the face of economic troubles? ये सवाल उठ रहे हैं आज कोहेसिवनेस ऑफ चाइना के ऊपर. ओके, will it try to prop up its economy with an export surge that will run headlong into Western efforts to promote green technologies and increase their own production? Will it try to distract from domestic difficulties by engaging in military adventurism? क्या बाकियों के ऊपर वार कर सकता है? हम बात करते रहते हैं. 3 ऑप्शन है चाइना के पास मिलिट्री एडवेंचरिज्म के लिए. ताइवान, फिलीपींस आज के दिन और इंडिया. इसके बारे में भी अलग एक एपिसोड करूंगा. So let's not gloat about China's economic stumble, which may become everyone's problem. अगर चाइना का इकोनॉमी और डूबता जाएगा तो डिस्टेबलाइजेशन होगा. इंडिया के लिए वो अपॉर्चुनिटी है पर डेंजर और रिस्क भी है. तो बात यह है कि क्या हम तैयार हैं इस अपॉर्चुनिटी को में फायदा लेने के लिए या फायदा उठाने के लिए. और जो रिस्क है और जो डेंजर्स है अगेंस्ट मिलिट्री एडवेंचरिज्म ऑफ चाइना, कैन वी मार्जिनलाइज दैम? उदाहरण के तौर पर आज खबर आया है कि चाइना का वो स्पाई शिप जो है वो मालदीव जा रहा है. हम क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये खेल तो चलता रहेगा और इस खेल को अच्छी तरीके से खेलने के लिए हमें चाइना का हालत जो है ना वो पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर हो क्या रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है. ओके, ये अभी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ जापान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च. लुक एट दिस ग्राफ. The top blue line is the growth of the Chinese GDP. The bottom red line is the growth of the, sorry, top blue line is the growth of the US GDP. Bottom line is the growth of the Chinese GDP. Chinese GDP अगर आप देखिएगा तो नीचे बढ़ता जा रहा है. अगर उसी तरीके से बढ़ता गया तो वो डॉटेड लाइन के ऊपर चलता जाता. एंड
बाय 2030-40 हो सकता है ओवरटेक करे। पर पिछले साल ही उन्होंने बता दिया जापान ने कि होगा नहीं। पर नीचे देखिए, एक जगह है 2024 2 और 24 के बीच में, जो कड़ा लाइन भी मैंने उसमें लगाया, वहां ग्राफ फ्लैट हो जाता है। और इस ग्राफ में ये बताता है कि फ्लैट होने के बाद 2024 के बाद ये वैसे पुराना ग्रोथ रेट पे चलेगा। पर क्या ये चलेगा ऐसे? अगर ये चलेगा नहीं तो इसके 2-3 ऑप्शंस हैं, राइट? यही, ये जो सर्कल में है, जो फ्लैट इलाका है, उसके बाद जो है, विल इट रिज्यूम द नॉर्मल ग्रोथ? देयर इज नो गारंटी, it might not. So what are the three options? It could resume the normal growth after that point. It could grow along that axis, in which case the growth will be very low and the GDP also will get subdued. Or it could be somewhere in between. In my opinion, it will be somewhere in between. So definitely the expectation of the China 2030 report कि 2030 तक China would have overtaken the US GDP, वो तो हो नहीं रहा। उनका जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट है उसका विपरीत गए आप। ओके, आप ये देखिए प्राइवेट फर्म्स ये बोल रहे हैं कि डेज ऑफ रनवे ग्रोथ आर ओवर। ओके, खत्म। प्राइवेट फर्म्स भी टफ है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इतना जोर है उस रिपोर्ट के अंदर, बिल्कुल उल्टा किया है। ये मैंने बताया स्टेट, व्हाई हैव मिलियंस ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, ये सवाल उठ रहे हैं, ये हो रहा है। 25 मिलियन हैव ड्रॉप्ड आउट। उस रिपोर्ट में बताया गया भाई इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी, और ये उल्टा हो रहा है इधर ऑन ग्राउंड। ओके, चाइना's LGFVs, local government financial vehicles, must repay a record so much billion in bonds by 2024। कर्ज में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट में क्या बोलता है कि उनका फाइनेंस स्टेबलाइज करो। जी जिनपिंग और कंपनी ने कुछ नहीं किया, उल्टा उनका एलजीएफवी। एलजीएफवी क्या होता है ये समझाता हूँ। मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ या एक शहर का गवर्नमेंट हूँ, मेरे को पैसा चाहिए किसी चीज बनाने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई उसके लिए मैं बॉन्ड जारी रखूं करूंगा। बॉन्ड किसको? सब लोगों को बेचूंगा, पैसा लूंगा उनका, और सिनेमा हॉल बनाऊंगा, मॉल बनाऊंगा, जो भी बनाना है बनाऊंगा, और उसके कमाई के ऊपर इसका ब्याज सहित वापस करना है। वो नॉर्मल स्कीम है। पर ये इतने एलजीएफीस इन्होंने चालू कर दिया है कि ये पैसा वापस नहीं कर सकते। अगर पैसा वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने मार्केट से उठाया। मार्केट कौन है? बाहर वाला कोई नहीं, कुछ तो दिया होगा, बट मोस्टली मार्केट विद इन चाइना है। अगर ये पैसा नहीं वापस कर सकते हैं या सूद नहीं दे सकते हैं, या बॉन्ड्स में डिफॉल्ट इंटरनल हो सकता है, और वो अगस्त पिछले साल हुआ था एनान में, तो लोग और गरीब हो जाएंगे। अगर लोग और गरीब हो जाएंगे तो कंजम्पशन कहाँ होगा? इंटरेस्टिंग। पोल्यूशन, इनका कोल फायर्ड प्लांट जारी है, तो कहाँ से ये जाएगा आगे? ओके, एक आर्टिकल लिखा है, चाइना's growth can be seen as half full, not half empty। फुल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, हाफ है, वो तो कहानी है। पर है तो हाफ एम्प्टी ना, वो नहीं है जो होना था। ये मान रहे हैं अभी आजकल ऐसे आर्टिकल्स में। लास्ट, ये मैं, मेरा अटूट विचार है, नो कम्युनिस्ट कंट्री हैज बीन रिच। कोई कम्युनिस्ट देश अमीर नहीं हुआ है। जब लोग अमीर हो जाते हैं, कम्युनिज्म वहां से हट जाता है। जी जिनपिंग चाहता है कि देश अमीर हो पर लोग गरीब हो।
और लोगों को गरीबी, गुर्बत में रखने से ही सीसीपी जो है वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो सीसीपी लुढ़क जाएगा। तो ये सब देखते हुए और जो पिछला पहला जो एपिसोड व्हाई चाइना विल नॉट रिकवर, उसमें मैंने जैसे बताया आप लोगों को, मेरा अप्रोच अलग था। मेरा अप्रोच था इनके खुद के पेपर्स के बारे में। इस वीडियो में अप्रोच मेरा ये है कि जो बाहर के विचार, जॉइंट विचार और उनके खुद के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करो तो एक दृश्य निकल आता है। बस बात यह है कि ये दोनों दृश्य बराबर, कि चाइना वापस नहीं आएगा। चाइना विल बी अ प्रॉब्लम। अगर चाइना विल बी अ प्रॉब्लम, तो हाउ विल इंडिया हैंडल दिस प्रॉब्लम? इंडिया हैज टू राइज, इंडिया हैज टू look after its people, India has to defend itself, and India has to be a net security provider in the IOR. It has to become or make efforts to get a seat on the high table in the UN. So India has a lot to think. क्योंकि चाइना आपको छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान भले कुछ ना कर पाए, जैसे हमने कल बात किया था, चाइना आपको छोड़ेगा नहीं, राइट? अभी मैं सवाल लूंगा। दैट्स अ सोर थ्रोट, चलता रहता है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, रोहित। How deeply entrenched are Chinese roots in Western entities? They rarely criticize or openly call out China and are very careful with the words they use or ratings they give as opposed to with us. Ritik, what you're saying is right. That was the time. Not anymore. Not anymore. That's why I brought out what Adam Krugman said. Paul Krugman. What Paul Krugman, who's Nobel Prize in economics, he said. That's why I put it out in front of all of you. When people start losing money in China, and they're losing quite a bit, you see that graph which I showed you, it's just gone down. And today, like there's a, okay, I will come to that. I'll come to that question because it's an interesting question. All of you should understand this. China planned internal consumption will be through increased wages, which will also increase the cost of their manufacturing. Look, that's all fine, but they've not been able to do anything. What you're saying is fine, Vishnathan, but they've not been able to do anything. CNN was heavily infiltrated by Chinese. I agree. They've done infiltrated even India. They've infiltrated your governments. They've infiltrated state government. They've infiltrated everything. CNN तो बहुत दूर की बात है. Thanks, Sharmila. It's just a cold. I'll get out of it. But your good wishes are welcome. How many years would it take to have economic, military, and technological parity with China? We are not interested in that. We are not interested in economic, production, military, or technological parity with China. We are interested in India growing the way it is supposed to grow. To hell with China. Yeah, our South Indian cities are highly industrialized with consequent pollution. Yeah, I agree with you. We have to be cautious, otherwise we'll have the problem. I can see it in Chennai. Chennai is a very highly industrialized city. It's called the Detroit of India. From what it was to now, the level of pollution is tremendously high. Okay. Yeah, yeah. Ask General Sir 278 billion package for revival of stock market by CCP. Will it work? How can it work? What is this doing? So China is going to buy all its stocks back. Deploying this 278 billion means that what? From the open market, China will start buying stocks back.
Earlier, you had some stocks which were going down, and you bought stocks. You bought more of stocks because you're deploying less money because the stocks of value are down. But at the end of the day, that stock value is useless. It might go down further. Unless there's a revival, nothing will happen. Is there a revival? It's a question mark. So instead of these stocks being in the open market, it will be more in the state market. The state will have more stocks. State control will increase. That's the danger. Yeah, would China be constrained by ever growing? Yes, it is. It's already there. It's already there. And we'll talk of it in time to come. They're worried. They're worried that industry is shifting to India. They're worried that India has got a bigger say in the West. They're worried that India is knocking at the doors of the UNSC. Even Elon Musk has said India should be part of the UNSC. So they're worried. There's no doubt. Okay. It would seem that the present reportage is a US threat perception report, which they handed over to the Chinese to probably see what new leadership would. We're not talking of threat perception. We are only talking of why China will not recover. Okay? US threat perception is their analysis. So I go by it to a large extent. And China has indicated that it will do what the US is trying to say. Today, China is at odds with you, with Philippines, and with Taiwan. There's no doubt in its periphery. Further, it has problem. It is stoking tension. I wouldn't say stoking tension. It's forming an axis with Russia, Iran, Pakistan, and China, of course, and North Korea. So there are problems. It's not a perception. Ah, Don Bush law, learning something. Yeah, thank you. There are many products which we source from China. Can we friendshore or reshore it? We must. It's up to the government to do so or not. As simple as that. The government has to do. We have a skewed development in India. There's no doubt about it. Our development is completely skewed. We need to do a lot more. भाई देखो बड़ा simple है. Unless you do the hard work and logically कुछ नहीं होगा. 3 days back, 4 days back, I did a video. आप लोगों ने बहुत देखा नहीं होगा. Gonna short tech के अंदर. I spoke with Vijay. What did we speak? India is trying to make manufacture chips. But just by manufacturing chips with brought out technology won't make you great. What about the other issues? From a chip to an app, you have to make a compiler, you have to make a program, you have to make X, Y, Z. Go through it. There's 7 steps. We're not doing anything for the 7 steps. Yeah, बात हो रहा है. You're talking only of the last level कि chip बना लो. या हम apps बनाएंगे जी. बीच में वो 5 स्टेप क्या करोगे? भूल गए हम. उसके लिए गवर्नमेंट का निवेश चाहिए, पॉलिसी चाहिए. वी डोंट हैव. देखो, आई एम वेरी क्लियर. Our government is taking shortcuts on this issue. It will not benefit us. We have to change to a holistic development policy. Yeah, and land, mainland plus occupied Tibet and Mongolia, yet PRC lags behind in internal consumption. What's this paradox? By nature, Chinese don't want to spend. I will talk of this in the next thing on the middle class problem of the Middle Kingdom. 28, 29. We'll talk of it then.
I don't agree that CCP want poor Chinese. They want all Chinese people to be governing class globally, but the Chinese people need. Well, Anand, you might have your ideas, but this is the fact. The fact is what I've said. Okay, this is the fact of communism all over the world. Okay, and this is the fact why Jack Ma was broken. This is the fact why other educational technology sector was broken. This is the fact why the property sector became a problem. Okay, they say they want rich people, but they don't actually want that to happen. They want common prosperity, not capitalistic prosperity. Common prosperity won't happen. Will Chinese dominance in electric vehicle technology profits economy? To a little extent. This is one island of excellence. It will not offset all your problems. क्या चाइना में प्रोटेस्ट होंगे या जिनपिंग के सकता है पलट हो सकता है देखते हैं कैसे चलेगा रोज दिन पर दिन हालत खराब होता जा रहा है वहाँ देखते हैं क्या होगा how US benefited from China financially or otherwise. Oh, a hell of a lot. Look, let me tell you the economy of an Apple iPhone. When you and I buy an Apple iPhone, you say buy it for $100. The Apple iPhone is made in China with parts from Korea, Japan, Vietnam, and China. The cost of the parts from all these people are about 5% or 6%. The assemblage cost for China and Foxconn and all that is about around 5-6%. It's about 10 to 12% is the production cost. The balance 90% is Apple's profit. That is the way they have gone. It's, so if someone thinks that the Chinese, you know, US has not made money out of China, no. The problem is suddenly US sees that China has reached the stage when it can outdo USA and have its own products. It's had problems. And that is why this chip war. Yeah, Mahabharat states prosperity will come automatically when Dharma prevails. Yeah, let's see when the Dharma will come. Is Yug mein. What is your current defense strategy in Malacca? We are doing it. We are doing this on 29th. Come. I'm getting 3 experts on this to talk to you. Ask them. Okay. There are other perspective also for China wealth because they're shifting to Vietnam. Yeah, that's also happening. I don't say no to it. Okay. But that doesn't benefit China. Okay. Everyone knows what's happening. It's not as if this thing. But overall, look, Chinese stocks going down is not, it's a fact of life, isn't it? So that's how it is. We'll not talk of reunification. Okay. When we aim that Bharat should be the net security provider in IOR, but when our other nations see a little Qatar and now Maldives are showing what impression it leaves. We'll talk again, ask this question when we discuss Maldives. Okay? Should GOI make a concerted effort to improve people to people contact, this circumventing negative narratives about India? Highly necessary. There's no doubt about it. Okay? स्पाई शिप आ रही है मालदीव्स में 29th मालदीव्स के बारे में बात करेंगे उस वक्त ये ये सवाल पूछिएगा और वो एक्सपर्ट पैनल से आपको सवाल दिला दूंगा और उस वक्त मैं भी सवाल आपका जवाब दूंगा राइट वी फिनिश्ड आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड दिस इफ यू हैव लाइक्ड इट
press the like button. Also, please give this to all your friends. Subscribe to Gunner Shot, right? Join me as members so that it benefits someone, right? And uh, the more you join, the more I will be happy to give out this in-depth analysis. I do understand the youth of today might not like this in-depth analysis. They want, भाई 10-15 मिनट में कुछ बात करो और खत्म करो. But I would like to put it across in as uh, greater depth as required, because that gives you the truth. That gives you the correct thing. And then you can make your own decisions after that. Right? With this, thank you, good evening, and Jai Hind.